Hello friends, welcome to ProTalent, and this is our module number 2 for important world affairs. World affairs are important, and here I am covering some important aspects which you should remember for your current affair part. Number 1, म्यांमार और यूनाइटेड नेशन का एक MOU हुआ फॉर रोहिंग्यास. अब ये ध्यान रहे that there is यूनाइटेड नेशन का एक कमीशन है which is यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर refugees. So this is UNHCR and UNDP has signed an agreement which happened in June 2018 between Myanmar and United Nations for Rohingya people. Rohingyas are the Muslims. Okay, Rohingyas are the Muslims who are not allowed to stay in Myanmar. तो वहां पे प्रॉब्लम हो गया और उनके बीच में म्यांमार के जो लोग हैं और रोहिंग्या के बीच में लड़ाइयां चालू हो गई. There are more than 8 lakh Rohingyas who fled from Myanmar and they went to a place called Bangladesh and some people came to India. So this is basically a Myanmar problem. म्यांमार में रेखाइन करके जगह है. क्या जगह है? रेखाइन. Okay, so this is what you should be remembering. So Myanmar United Nations MOU हुआ है. Next is called Lloyd City Risk Index और उस City Risk Index के मुताबिक दिल्ली, मुंबई and Bangalore they come under top 10 cities globally at the most risky cities as per Lloyd. Okay, so this is Lloyd City Risk Index. It is released by Lloyd. It is measuring GDP risk. That means भाई जो भी कंट्री का GDP है और सिटी का GDP है वो कितना रिस्की है. So Delhi is at 5th position. Mumbai is at 7th position. Another part called Indian naval ship Sunayana has evacuated in Yemen. So उसने क्या किया? Evacuate किया. कितने लोगों को? 38 Indian nationals who were stranded in Yemen in a particular island called island of Socotra, and that is after Mekenu cyclone. So ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. मैकेनू एक तरीके का साइक्लोन था और वो सोकोत्रा आइलैंड में था और वहां पे कुछ इंडियंस फंसे हुए थे, तो हमने एक नेवल शिप भेजी थी जिसका नाम है सुनैना. Similarly, there is a most powerful supercomputer available, which is most powerful supercomputer. It is basically developed by USA and name of it is called Summit. Okay, क्या नाम है उसका? Summit. और उसकी ऑपरेटिंग स्पीड कितनी है? It is 200 petaflops. 200 petaflops means 200 quadrillion calculations per second. One quadrillion is 1000 trillion. So that means 200 into 1000. So that makes it to around 2 lakh trillion transactions. 2 lakh trillion. So that means 2 lakh trillion calculations per second. That is how the most powerful. So पहले किसका था? It was earlier China. Okay, so it was, you can say, known as Sunway Taihu Light. They were of China and now it is USA. नाम क्या है उसका? बहुत ही simple, Summit. Okay, next is called United Nations Guide on Fighting Anti-Semitism. Okay, so there may be a question about what is anti-Semitism. Anti-Semitism का मतलब होता है कि भैया जो लोग Jewish people के खिलाफ, okay, this is primarily people who put hatred through Twitter or any social media, and that is about Jewish people. Anti-Jewish सेंटेंस लगाना, एक्सट्रीम वायलेंस करना, एक तरीके से एंटी सेमाइटिज्म एक से विचारों को फैलाना, उसके खिलाफ यूनाइटेड नेशन का ये गाइड रिलीज हुआ एंड दे रिलीज फर्स्ट एवर गाइडलाइन ऑन फाइटिंग एंटी सेमाइटिज्म इन एजुकेशन. ओके, सो याद रखिएगा, दिस इज यूनेस्को ने लॉन्च किया है. यूनेस्को के पहले जूइश डायरेक्टर जनरल इज ऑड्रे ऑजेले. ओके, सो जो आपके सामने दिख रहा है, और ये है यूनाइटेड नेशन का गाइड ऑन एंटी सेमाइटिज्म. नेक्स्ट इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन ऑन पैलेस्टाइन, जिसको यूएस ने वीटो करके रोक दिया था. अरब कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशन में एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन डाला था ये बोल के दैट पैलेस्टीनियंस आर गेटिंग अफेक्टेड इन अ बैड वे बाय इजराइल.
और इसके लिए हम एक रेजोल्यूशन लगाना चाहते हैं दैट देयर शुड बी अ काइंड ऑफ guaranteed measures for safety and protection of Palestinians while USA put a veto on it, saying that this is not acceptable. Okay, 4 countries have abstained. Britain, Ethiopia, Netherlands, and Poland have abstained from putting any kind of, you can say, measure. इंडिया ने, ठीक है, इंडिया ने इट इज पैलेस्टीनियन के फेवर में ये रिजोल्यूशन किया था, पर एट द एंड ऑफ द डे यूएसए ने इसके ऊपर वीटो डाल दिया. ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पुअर लोग कौन सी कंट्री में है? इट वाज इंडिया अर्लियर एंड नाउ नाइजीरिया क्रिएटेड ट्रबल टू अस. ऐसा बोल सकते हैं ना जी? नाइजीरिया is now in a trouble. India has just 63 million, you can say, people, while in Nigeria there are 88 million people who are extremely poor. Okay, and what is the benchmark for extremely poor? It is people living under $1.9 per day. अगर उनकी इनकम इतनी है, so that is basically called extremely poor people, and Nigeria hits it. Okay, next is called Cuba and USA has started their postal service. On 1st June 2018, they have agreed to permanently restore a direct postal service between these two countries. Okay, ध्यान रहे, this execution of the service in its current form began in April 16, 2018, but they have actually allowed it officially from June 1, 2018. It is for more than 48 years ये लोग एक तरीके से postal activity नहीं करते थे. Next is called USA decided to withdraw from INF Treaty. What is INF? INF is known as Intermediate Range Nuclear Forces Treaty. Intermediate Range Nuclear Forces. It was signed in 1987. उस समय पे रोनाल्ड रेगन और मिखाइल गोर्बाचेव थे. ठीक है, रोनाल्ड रेगन फ्रॉम यूएसए, मिखाइल गोर्बाचेव फ्रॉम यूएसएसआर. They have agreed and it barred the deploying land-launched cruise missile in the range of 500 to 55 किलोमीटर रेंज. किसकी वजह से आईएनएफ ट्रीटी में से बाहर गए? रशिया ने रशियन नोवातोर NM729 मिसाइल की टेस्टिंग करी और ये अमेरिका बोलता है इट इज इन वायलेशन ऑफ दिस ट्रीटी एंड देयरफॉर वी आर रिमूविंग. हाउ मेनी मेंबर्स आर ऑफ दिस ट्रीटी? आईएनएफ में सिर्फ 2 ही मेंबर थे, यूएसए और रशिया. यूएसए निकल गया, मतलब ये ट्रीटी की कोई मतलब नहीं रहा. इंडिया विल चेयर Kimberley Process Certification Scheme from 1st January 2019. What is Kimberley Process Certification? This is about conflict diamonds. Okay, so India is a founder member of Kimberley Scheme of United Nations. So जो भी रफ डायमंड्स है, जो लोग एक तरीके से conflict डायमंड्स, मतलब उसके लिए लोगों को मारते हैं, वायलेंस करते हैं और वायलेंस करके जो डायमंड कैप्चर करते हैं वो डायमंड चलते नहीं है. They are not acceptable diamond, because if those are acceptable diamond, then ऐसे वायलेंस बहुत बढ़ जाएंगे. And thereby this conflict diamond के लिए एक प्रोसेस है जिसका नाम है किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन और उसके चेयर बनेगा इंडिया. ओके, ग्रेट. नेक्स्ट, यूएसए पुट सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान एंड दैट केम इनटू इफेक्ट. दिस विल बी टफेस्ट सैंक्शंस एवर. ठीक है, कौन सी तारीख से आएगा? इट इज फ्रॉम 2 अगस्त 2017 और बीच में उन्होंने इंडिया और बाकी कुछ 8 कंट्रीज को एक एग्जम्पशन दिया था. उनके ऊपर सैंक्शंस की परेशानी नहीं थी. हम ईरान से बिजनेस कर सकते थे, क्रूड ऑयल मंगवा सकते थे, बट स्टार्टिंग फ्रॉम द 2nd of May, ठीक है, वी आर नॉट एबल टू गेट एनी काइंड ऑफ ऑयल फ्रॉम ईरान. सो दिस इज, यू कैन से, टफेस्ट सैंक्शन एंड दिस इज एज पर COMCASA law. Okay, what is COMCASA? COMCASA is countering America's adversaries through sanctions act. This is called COMCASA. COMCASA के मुताबिक, ठीक है, इंडिया को भी वो ना बोल सकते हैं क्योंकि उनका लॉ है saying that जो भी उनके एडवर्सरीज है उन एडवर्सरीज के ऊपर क्या लगा देंगे वो लोग? सैंक्शंस. और ईरान के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. देन देयर इज इंडिया और यूएसए के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम दिया गया COMCASA. क्या नाम दिया गया? COMCASA. It is known as Communication, Compatibility and Security Agreement. What is Communication, Compatibility, Security Agreement? This is basically peacetime as well as wartime communication between high-level military officials. Okay, this came as an outcome of 2+2 dialogue
इंडिया और यूएसए के बीच में आपने सुना होगा 2+2 डायलॉग हुआ था, और उस 2+2 डायलॉग के मुताबिक ये कॉमकासा फाइनली एक आउटपुट की तरीके से बाहर आया है। ओके, सो कॉमकासा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस हैज लॉन्च्ड न्यू फ्रेमवर्क. This is a sort of convention to combat the scourge of international terrorism. इंटरनेशनल टेररिज्म काफी परेशान करता है। ये परेशानियों को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक कन्वेंशन निकाला। क्या नाम है उसका? इट्स नेम इज यूनाइटेड नेशन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन कॉम्पैक्ट। आई थिंक दिस इज अ गुड स्टार मार्क क्वेश्चन बिकॉज ये पूछा जा सकता है। उसमें यूनाइटेड नेशन चीफ, 36 other organizational entities, Interpol and World Custom Organization are part of it. It is not binding in nature, and also one of the committee which is called 1267 committee monitoring team is also member of this. What is this 1267 committee monitoring team? This is the same committee जिन्होंने मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। So this is 1267 committee monitoring team, याद रखिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट इज कॉल्ड एडल्टहुड एज इन जापान। जापान में एडल्टहुड एज को इन्होंने रिड्यूस किया। ठीक है, पहले 20 साल हुआ करती थी, इट इज नाउ 18 years. ओके, वन ऑफ द मेजर चेंजेस that would be brought if changes in the civil code and laws are also made, which will be coming from, you can say, April 2022. So उसमें क्या होगा? इसमें they will increase the age for female to marry 18 years और for male it is 19 years. अभी के लिए male above 18 and female above 16 they can marry in Japan but with parental consent. Okay, और जब 20 के ऊपर थे तो उनको parental consent की जरूरत नहीं थी. So this is where a big change has occurred. फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन किसने बनाया? वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन वाज डेवलप्ड बाय रशिया। ओके, उसका नाम है एकेडमिक लोमोसोव। क्या नाम है उसका? एकेडमिक लोमोसोव, वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ठीक है, दैट इज रॉस एटॉम के द्वारा बनाया गया है। दिस इज रशिया का एटॉमिक एनर्जी वाली एजेंसी है ये। ओके, चलिए ग्रेट। अगला है जैकमा इज बिल्डिंग एन इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड ट्रेड प्लेटफॉर्म, e-WTP बोलते हैं इसको। दिस विल पॉसिबली इंप्रूव ग्लोबल सप्लाई चेन, जो भी उसके लंबे रास्ते हैं उसको कम करेगा। ठीक है, एंड इट विल बी अ गेम चेंजर एंड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक मार्केट। याद रखिएगा, जैकमा द फाउंडर ऑफ अलीबाबा। ठीक है, फिलीपींस एंड ICC. Philippines has given official notice to exit from ICC, that is called International Criminal Court. Okay, coming to referendum in Ireland. Ireland में किस चीज का रेफरेंडम हुआ था? It is anti-abortion law in Ireland has to be removed. Okay, so people are saying abortion has to be there and it has to be made legal. Okay, so this is anti-abortion के खिलाफ जो रेफरेंडम हुआ, उस रेफरेंडम के मुताबिक आयरलैंड में अभी एबॉर्शन इज अलाउड। ILO की सेंटेनरी सेलिब्रेशन दैट टुक प्लेस इन इंडिया। आई एम श्योर यू नो ILO. ILO इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ट्राइपार्टाइट UN एजेंसी। ठीक है, 3 पार्टी होती है, बराबर है। कौन कौन? एक ILO, दूसरा यूनाइटेड नेशन और तीसरा कंट्री। ये 3 पार्टी की एंट्री होती है। ठीक है, और ये मजेदार सा है जिसके करीबन टोटल 100 साल कंप्लीट हुए in 2019, and India was a founding member, and India has ratified 47 out of 189 ILO convention during the century. Next is called Gambia, is in the Commonwealth. Now Gambia has been readmitted to the Commonwealth on February 8, 2018. This African nation was welcomed back. You can say that this African nation was being part of Commonwealth. You can say some around 2013 के पहले उन्होंने 2013 में अपने आप को निकाल दिया और वहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुई थी, और उस डेमोक्रेटिक इलेक्शन के मुताबिक they said now we would like to be part of this Commonwealth. Okay, India is a member of Commonwealth but we are not getting any kind of monetary support. Finland experimented with the basic income scheme. So आपको पता होगा कांग्रेस ने एक न्याय करके स्कीम निकाली थी। This is basically a kind of giving some money to the people, है ना? कितना पैसा देंगे?
फटाफट बताइए, ठीक है। 6,000 रुपया महीने का, चलो मैं ही बता देता हूं। सो दैट इज 12 6 72,000 रुपीज पर एनम इज अ काइंड ऑफ मिनिमम बेसिक इनकम, ऐसा करके उन्होंने चालू किया था। दिस आइडिया केम फ्रॉम फिनलैंड, और फिनलैंड में दे वर गिविंग मंथली $635 to some around 2,000 unemployed people for 2 years. Interestingly, it did not result in working more, but it actually helped the well-being of the people involved. So this is a wonderful event took place in Finland. Okay, coming to next part called North Korean nuclear test site, जिसकी वजह से डिस्प्यूट चल रहा है, जिसकी वजह से परेशानियां चल रही है, जहां पे यूएसए और नॉर्थ कोरिया साथ में आकर बहुत बार बातें कर रहे हैं. This is a site which was in the news, and therefore there were a lot of problems. Okay, so North's decision to close Punggye-ri, this is a nuclear site. Okay, क्या नाम है उसका? Punggye-ri. Okay, this is a name of a site. याद रखिएगा, ये नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर साइट है. Then you have a world's most populous cities का एक रिकॉर्ड आया, जिसमें दिल्ली is projected to become most populous city by 2028 according to United Nations new estimates. Okay, currently it is Tokyo. It is world's largest city with some around 37 million inhabitants, followed by New Delhi. That is India, New Delhi will cross this in few years. By 2028 we will become world's most populous city. Okay, chaliye, great. So with this I'm closing this module. Possibly I'll be bringing one more module, okay, about this international affair before your CLAT. Okay, this will give you a lot of advantage. Okay, thank you very much and all the best.